आसन होता है? हाँ, आसन होता है मेले में जब आते हैं। और ऊपर में रहने का है। अच्छा। पहले ये किराए पे रहते थे। वो जो महाराज जी जो थे महाराज, वो रहते थे पहले। कौन? ये क्या नाम था उनका? जगत गुरु जो नाम, सामने आश्रम बना लिया। जगत गुरु ये इन आश्रम जो बना लिया था ना, श्री संप्रदाय के महाराज जी जो यहाँ वो किराए में रहते थे। अब खाली है, पानी का तकलीफ है, नहीं किराए पे तो उठ जाए। कितना किराया? 30 रुपया महीना। 30 रुपये में। हाँ, पानी का तकलीफ। हाँ, तो पानी दूर से लाना पड़े। कुआ तो है खूब, हाँ, पानी न दूर से लाना पड़े महाराज। तो कुआ दरवाजे पे तो हम लोग ले सकते हैं? जरूर ले सकते। जरूर महाराज, क्यों ना। हाँ, हाँ, तो बंदोबस्त कर दीजिए ना। अच्छा हो जाए। तो सुन पास। हाँ, Looks like it came from here. अच्छे हरे। Yeah. There is such competition. महाराज जी कह रहे हैं कि वो पीछे का जो है उसको किराए पे हमें दिलवा दीजिए और इसको बगीचे को हम ठीक कर देंगे। नहीं, ऐसा बात करता है। हाँ, बगीचे को बहुत कुछ बाबूलाल से भी कहिए, बगीचे को बहुत कुछ ठीक कर देंगे। तो किराए को कैसे क्या? बस खाली वो पोर्शन किराए को। कौन सा? वो पीछे वाला रहने का जिसमें वो रहते हैं रघुनाथाचार्य। रघुनाथाचार्य रहते हैं। अच्छा, तो आप काय के लिए ले रहे हैं उसको? हमारे पास आदमी बहुत है। अच्छा। हाँ, उधर संकुलन नहीं होता। अच्छा। कभी कभी वो समझ लीजिए वो होगला आश्रम इधर उधर सब रहते हैं, इसलिए। हाँ, तो इसलिए आई लाइक दिस गार्डन वेरी नाइस। हाँ, गार्डन का तो बगीचा उन्हें बहुत पसंद है, उसमें तो हमारे आदमी रहेंगे। इसको नहीं है, मैं खुद भी रह सकता हूँ। अच्छा। आज मैनेजर से बात कर लेंगे हम। कर लीजिए, मेरे इनसे टेलीफोन पे। It maintained very nicely. We can get flowers, much flowers. वो फ्लावर उधर भगवान कृष्ण बलराम, इधर रंगनाथ जी, सबको लग सकते। हाँ, ये बहुत सुंदर। हाँ, वो कह रहे हैं जमीन बड़ी बढ़िया है और किया जाए, बहुत दूर हो गए। वाटर सप्लाई इज देयर। कुआं है क्या? कुआं है इधर? कुआं मोटर लग रही है। ट्यूबवेल से लगा, दो कुआं हैं। अच्छा। दो कुआं में उधर खेती होता है। एक कच्चा बगीचा और एक पक्का है। ये पक्का वास्ता वो कच्चे बगीचा के नाम से है प्रसिद्ध। अच्छा, तो उसमें जो है सो खेती होती है। दो बगीचे हैं, एक ये है इसके पास। अच्छा, इसके पास है। तो एक यहाँ पे भी कुआ, ये बराबर में। हाँ, यहाँ कुआ भी एक कोने तक। The river is very near. Just after that garden, Jamuna. तो पानी तो इधर मिठाई होगा। हाँ, बहुत बढ़िया मीठा तो बहुत बढ़िया तो नहीं है, पहले तो बढ़िया था, लेकिन अब कुछ खाली हो गया है। 400 आदमी है। अच्छा, इसीलिए संकुलन नहीं। हाँ, तो वो और उसका सेट तो करना ही पड़ेगा। और जमीन हम लोग ले रहे हैं मकान बनाने के लिए, तो अभी है ही नहीं, अभी बड़ा गुंजाइश ठीक नहीं। अच्छा। These people they like वृंदावन। हाँ, इन लोगों को वृंदावन बहुत पसंद है। बड़ा पसंद होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं जो सब। वृंदावन तो धाम ही ऐसा है, किसको पसंद न होगा। ये तो चीज ही ऐसी है ना, रम्मा का चीज उपास वृंदावन था। तो आप तो 11 तारीख को पधार रहे हैं ना अमेरिका? हाँ, तो 4 दिन में तो निश्चय होना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, अगर आप लोग निश्चय करें तो हमारा आदमी तो रहेगा, वो सब करेगा। आप टेलीफोन नंबर क्या है? हाँ, व्हाट इज टेलीफोन नंबर? 179 8 वृंदावन 178 178 जी।
क्योंकि ऐसा है कि मैनेजर ट्रस्टियों को लिखेगा, ट्रस्ट के अंदर है ना। हाँ, एक ट्रस्टी तो हमसे बहुत पहचान है, वो मिस्टर एसके सोमानी। सोमानी साहब जो गजाधर जी थे, उनका तो देहांत हो ही गया था। हाँ, वो तो है नहीं यार। अब तो वो नहीं, उनके भाई हैं, तो भाई जो हैं सो वो बंशीधर जी हैं। हाँ। और एक उनके वासुदेव जी हैं, जो उनके चाचा के लड़का हैं भाई, 2 सोमानी में हैं। तो दे आर नॉट ट्रस्ट। गजाधर तो उनका देहांत हो गया। उनसे हमारा खूब परिचय। हाँ, तो गजाधर जी तो बड़ा अच्छा आदमी था, उन्होंने तो रंग जी के मंदिर को बड़ा भारी जो है तो किराए पे देने के लिए ट्रस्टी जी क्या पूछा है ना, किराए के लिए वो। हाँ, whatever you think, as you like, we can make. मैं बात कर लूँगा, उनसे बात कर लेते हैं। ये डोनेशन भक्त लोग मतलब देते हैं, मंथली कुछ डोनेशन, मंथली डोनेशन है। और वैसे कुछ बिल्डिंग है और रेंटेड है उधर बाहर। आजकल तो रेंट में कुछ मिलता ही नहीं। अब ये है पुरानी ही है, पुरानी है, चलिए ये पुराने मतलब इस तरह से। मंदिर तो बहुत सुंदर। आप नौमी के दिन मतलब है होगा, मतलब जरा यज्ञ होगा उस दिन। आप नौमी के दिन कभी दोपहर में? मतलब कल है, परसों है मतलब अपने। अच्छा, तो सब चंडी पाठ पाठ वगैरह कभी आप जैसे आप बताएं हमारे दोपहर में कभी। I can remember from Chaitanya Charitamrita when devotee of Lord Ramachandra was always chanting the name of Rama, but Lord Chaitanya could make you chant Hare Krishna. there is competition like that. One will say, Hare Ram, Hare Krishna, no, Hare Krishna. He was very obstinate. That man in Delhi. That man in Delhi thought we had something against Lord Ramachandra. There are many versions like that. Somebody will say, your Ramchandra may be very important person, but when Radharani goes to Krishna, Lord Ramchandra becomes his guard with an arrow. Radharani goes to Krishna and Ramchandra has to serve Radharani with arrows and bows. This is Gorur. Srila Prabhupada? What is that 6-pointed star, the significance? Chakra. Oh. What is the symbol on the right-hand side, Srila Prabhupada? I think Shankha. Is that a conch, is it? Thread from the deity, the all-sacred thread, and they tie it on their wrist. They tie it here. Who? Some of the devotees have started to do that now. What? I don't know, it's just like wearing beads. The sacred thread from the deity, after replacing, they take the old one and they wear it here. Who has told them? I don't know. Then why do you... Well, I told one boy to stop it. And because I couldn't quote any authority,
He No, keeps there is wearing. no authority. Where is his authority? Yeah. Isn't this nonsense should be stopped? Yeah, I thought it was wrong. That's why I mentioned it. I wanted to make sure. Stop this. Okay, I sure. think their idea is that because it's prasadam from the deity, that they can they're able to wear it. Like That is another concept. The sacred thread is not used like that in the hand. No, I thought it was wrong. Seems like some kind of fashion or something. Concocted fashion. small black beads that the devotees are wearing from Radhakund. They have a string of beads made of clay from Radhakund. Are they... Radhakund clay is not made. So it's all right to wear them? Is it all right? Not very constantly. Sometimes I think, Srila Prabhupada, that you're worried that one thing will lead to the next. Actually, all we have to do is follow your example. Yeah, we don't have to add anything. What can we add? What is the use of it? What can we add? There is a proverb in Bengal that the crows, they eat stool. But when the crow is very young, he eats more stool. Excuse me. Tendency always has to be done. Yeah, right. As soon as there is little opportunity. Yeah. It's something we have to guard against very carefully. Don't allow them. Don't allow all this. Even in India, people say like that. Oh, you're hippies. As soon as you become hippie, immediately your all prestige will go. Finished, yeah. Very carefully. Yeah. The thing is, a lot of the devotees are not very much conscious that they're being watched by very carefully by the public. Bird of paradise? No. No, bird of paradise is different. Different.